the journey of knowledge sharing. Now it is not only a journey, it's a saga of history, scientific history. We have our 5,600 plus YouTube subscriber, for whom we are conducting these webinars to generate the content, and our best wishers, our well wishers, and our senior scientists will join also in due course. Today we have two webinars. First on Statistics Day, Biostatistics for AYUSH. I would like to welcome all the speakers, Dr. Geetika, Dr. Mrina, Dr. Parikshit Devnath ji. All speakers will be welcomed again by respected Professor Vishnu Prasad Sharma ji, ex-principal, Government Ayurvedic College, Guwahati. I would like to welcome Professor Ramveer Sharma sir, dignitary of Ayurveda from Rajasthan. Welcome sir. Welcome Ramveer sir. And I would like to hand over the mic to Professor Vishnu Prasad Sharma ji for his welcome address. Thank you. Namaskar. Good evening to everybody. Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series on Biostatics for AYUSH. Most important subject today we have. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Dr. Geetika K.M. Kottakkal Ajjabaddasala Clinic from Kotha Mangalam. Namaskar and welcome you. Thank you, sir. Namaskar. To this AYUSH SAMRIDDHI webinar. Next, I want to welcome Dr. Mrinal R. Akre, Associate Professor, Department of Dravaguna, Global Institute of Ayurveda from Rajkot. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH SAMRIDDHI webinar. Next, I want to welcome Dr. Parikshit Devnath, Associate Professor, Department of Shastravitra from Gorakhpur. Welcome, Parikshit Devnath, to this AYUSH SAMRIDDHI webinar on biostatics for AYUSH. Once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series on biostatics for AYUSH. Once again, I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Over to Pavanji. Thank you. Thank you very much, sir. So nice of you. मैं आदरणीय अग्निहोत्री सर को सादर नमन करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं फॉर प्रियम्बल ऑफ द सब्जेक्ट। धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी और हमारे सभी मंच पे उपस्थित सभी मनीषियों और सभी अतिथि वक्ताओं का हम हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सर्वप्रथम हमारे अपने भारतीय समाज में मनाया जाने वाला करवा चौथ का विशेष हमारी बहनों, महिलाओं, भाभियों, मौसियों, मामी, बुआओं, पत्नी सभी के सौभाग्य का ये पर्व सबके लिए खुशी प्रदान करे और अखंड सौभाग्यवती रहें सभी। इसी शुभकामनाओं के साथ में आज पधारे हुए मंच पे हमारे सभी अतिथिगणों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज के टॉपिक पर ये चर्चा करना चाहेंगे कि हमारी पूरी की पूरी मेडिकल साइंस विदाउट बायोस्टैटिस्टिक्स के इनकम्प्लीट है और अपूर्ण है और हम समझते हैं कि अपंग है, क्योंकि बिना डाटाज के, बिना किसी भी प्रकार के हमारे पास अगर सैंपल साइज के हिसाब से मटेरियल नहीं है तो हम किसी भी देश की माने जनसंख्या से लेके प्रिवेलिंग ऑफ डिजीजेस से लेके इम्प्रूवमेंट पूरा रिसर्च वर्क टोटल, चाहे वो CCRS हो, चाहे हमारा कोई भी पाठ्यक्रम का क्रम हो, कोई रिसर्च की फील्ड हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, बिना बायोस्टैटिस्टिक्स के हम लोग कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं रहते हैं। किस जगह किस प्रदेश में क्या मॉर्टिलिटी रेट है, क्या मॉर्बिडिटी रेट है, औषधि कितने % कहाँ काम कर रही है,
फील्ड में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन कितना है, कौन सी डिजीज किस क्षेत्र में कितनी फैल रही है, और टोटल रिसर्च वर्क इस पर डिपेंड करता है। बाकी हमारे आज के सभी अतिथि वक्ता इसी दिशा में और आगे बतलाने के लिए हमारे यहाँ पधार चुके हैं। उनका बहुत हृदय से स्वागत करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाली जानकारी के लिए बहुत ही मुमुक्षित है और विश्वास है कि हमको आज नई नई जानकारियां सुनने को मिलेंगी, जिससे कि इस क्षेत्र में जो बायो स्टेटिस्टिक्स की जो फील्ड है उसको हम लोग और अधिक उससे सशक्त हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ में सभी का बहुत बहुत आभार करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं और आगे के लिए प्रोफेसर पवन शर्मा जी से निवेदन करते हैं। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। हैप्पी करवा चौथ आपको भी और भाभी जी को। इधर ससुराल आए हुए हैं, अभी 5 मिनट पहुंचे घर। यहाँ पर चंद्रमा फील्ड पे जल्दी दिख जाते हैं, लेकिन अभी है 10-12 मिनट। आज वो तरसा तरसा के आता है, ये देखो ना, लेडीज की ये परीक्षा लेता है। नमस्कार भाभी जी, राम राम। राम राम। हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। हम लोग इधर आए हुए बस 5 मिनट पहुंच रहे हैं। पहुंचिए। जी धन्यवाद। So now I would like to invite Dr. Geetika KN for his presentation. Welcome, Dr. Geetika. You are first time on the platform and I hope you will be our regular speaker on the topic of your interest, whatever you want. Welcome. Yes, sir. I will try. Can I share my PPT, sir? Yes. Excellent. Is it visible, sir? Yes, PowerPoint is visible. You can, yes, yes, excellent. Is it moving, sir? Yes. Let me start, sir. Sure, welcome, welcome. Om Sri Dhanvantariye Namaha. Respected dignitaries and all the Ayurveda Vaidyas in this platform. As you all know, today is the World Statistics Day, and as of your knowledge, every 5 years only we are celebrating the World Statistics Day, and the last one was in the year 2020 and the next in the coming year 2025. And that too, they had the theme connecting the world with the data we can trust. So the heading of my presentation itself says integrating statistics into the Ayurveda. The integration, the word has come into our Ayurvedic science recently, where we come across many terms like validation, efficacy, and then evaluating our results or translational results from theory to practice studies, etc. So we may have to come across many of the challenges, and opportunities are still there and solutions are there. We have to find out or dig into the results. First of all, let me introduce myself. I am Dr. Geetika, completed my BMS and MT Panchakarma from Amrita School of Ayurveda, Kerala, and now I am working as an Ayurvedic consultant as well as a medical officer in the state of Kerala. Moving on to my contents, and then biostatistics, a few lines about it. It means the application of the statistical techniques in this field of health relating to medicine, biology, and also the public health, and the development of new tools to dig deep into this area of research. So, what about the picture shown in my presentation, do you think? A Vasti Ede keeps the doctor away. If your study concludes like this, do you think that it is good or not? No, sure. So don't be proud. With 0.99 probability, your stat might have failed. So these are the results that are used to communicate the research findings to validate the result. So what is our main aim? We want to prove the efficacy of our study. That is the Chigilsa. So the statistics indeed plays a crucial role in validating the Ayurvedic treatments. So first of all, let me see what are the challenges we face as Ayurveda Vaidyas. Of course, the lack of standardization, and also many of the subjective outcome measures are interlinked, and this in turn affects the data quality issues.
So the non-linear relationships, that's we have the Prakriti analysis, the Dashavida Parisha, Ashtavida Parisha, these are all interlinked that we are not accounting into our research area. So indeed there is lack of education and proper training to Ayurveda Vedyas while formulating the results. So what we can do, that's the solution. There should be standardized research protocols in this area, and of course, this can be done with the collaboration between statisticians and Ayurvedic experts using the proper statistical techniques. And indeed, research funding and infrastructure should be proper, with many training programs could be incorporated from our side. Then let me ask you one question. Are you confused with your sample size calculation in your research studies? Of course. Then do you think that there is a formula that is a ready-made formula available for sample size? Of course there is not. We want to find, or what's our main aim? We want to maximize the power or validate the result we are getting. So it is best to compute the alpha and beta values to reduce the type 1 error in our studies to maximize the power to our study. For that, we are properly arranging the data and we find out a proper test measure for assessing our results. For that, we are calculating a formula based on the test, and then only we are formulating the sample size. And if we want to find out two or more tests we are using in our study, then how do we calculate the sample size? We can do it separately and then take the larger sample size we are getting out of the formulas that is used for different tests. Then we move on to some of the examples from our part in statistics in Ayurveda, which enhances the research methodology. The first one is the clear-cut study of a clinical trial in Ayurveda. That's a simple study to evaluate the efficacy of Nasya Karma on Manya Stamba. Before and after values are calculated, then mean and standard deviation is calculated. So, what is the significance of the test used? That's the significance in this presentation. That's a pair t-test. We all know where these are used. That's one thing is in one sample t-test. So that means if a medication is administered and we need a desired outcome, so we must evaluate it with the effectiveness following the administration. Then in the second cases, we are treating the same illness with two different medications. So, in that case, the outcome may be influenced by many of the compounding factors that will lead to bias to our results. So, it could be necessary for us to give the same group the two different medications at different time intervals. That is a paired sample t-test. And the next one, the observational studies in Ayurveda, it's gaining more importance nowadays because to prove the or validate our results in our whatever that is given in our literature, we need many of the observational studies to find out the bioavailability, to prove the mode of action of our Panchakarma treatments. We need these studies. This is the one that I myself have done this study as a part of my research topics in our department. That's in we want to prove the bioavailability of the Anuvasana Vasti, that is that too in two groups, with and without Niruga Vasti we have taken. And the fatty acid Shirabala Thaila we have taken for this study. And the second one is, first we want to find out whether this fatty acid is present in the blood after the administration. That itself proves the bioavailability and how much plasma concentration we are getting in two groups. So, we have done with the analytical technique of GCMS, chromatographic analysis, and with that, due to lack of funding and all, with that we could get only little bit idea. But using proper statistician help, we could find out there are variations where we are giving this Thaila with Niruhavasti and without Niruhavasti. And that is a Euclidean distance is the thing we have used here for computing the variation in both the groups. That using that distance, if that distance between the 2 points we have chosen, the greater the distance measure we have obtained, the greater will be dissimilarity noted. So that if we are comparing the two groups in a
in an Ayurvedic treatment protocol, we can find out whether there are variations in both the groups. That is the statistical tool we can use in case of lack of analytical techniques we are confronting. And at last, we got the results that there are many more metabolomic reactions happening inside this case. And with the Niruhavasti, only Anvasanavasti have its more efficacy value. The second thing is the regression analysis. What's this regression analysis we have encountered? That's the most important thing in as an Ayurveda Vaidya we need to know from my side. That's for predicting the disease likelihood. That's we have many of the Dashavida Pariksha and many of the factors we are encountering in our day-to-day clinic. So to identify the relationship between these factors such as their ahara, vihara, prakriti and the likelihood of developing these certain diseases or vyadi, that's lifestyle disorders and all, we can find out how risk it is causing to the person and identifying the high risk cases. And if we know the Purva Rupa, one can predict the severity of the Pratyatma Lakshana also using this regression analysis. And the most important thing is that using this type of test, we can find out whether these two variables are related, whether the diet, stress is related with the sleep patterns. That's in case of Nidra Nasha, we can prove out which of the variable is having impact on the health outcomes. The third one is the ANOVA test. This is a brief description on how we can use it in our day-to-day research science so that we can validate our results which proves its efficacy. It's an extension of the t-test that is already stated for comparing more than 2 or 3 samples we may have to compare. That means in case of a treatment karma, if you are taking a Vasti karma, if we need to know the glucose levels or BP levels, we need to take more than 2 times we need to take the sample measurements. So in the same person itself we are doing that, and 3 or more time points will be there. So the repeated measures of ANOVA only work here if we need to compare what is during the course of treatment. If we need to compare its levels, this is the main method we are using. And last of all, the recent trends in Ayurveda need to be encountered. What is our need at present? We have to see. We are in this era of genomics. So genomics based Ayurveda treatment, for that the validation that's from classics to theory to practice. That means our symptomology that is well written in Charaka Samhita, Sankhya Shastra and all are there, but the validation of these tools is not yet done. So using the symptomology, we need to do the validation and standardization of the treatments in Ayurveda using the proper statistical tool. And there we can find out what all specific chikitsa is to be given using that treatment protocol. There's an integrative healthcare pattern should be developed, and as such, the predictive modeling using many of the machine learning techniques so that we can predict the diagnosis and the treatment. Purusham Prati Chikitsa can be given. So, in this picture, you can identify he's stepping on to the first step. To reach the doorstep, there are many more steps. But if the first step is not proper, he cannot reach clearly to the doorstep. So, the data analysis, data collection, that's the main thing. So, Parikshaha, Tasmat Parikshaha Sadadam, it should be taken. So the pariksha level should be clear from our part as Ayurveda Vaidya, and proper education and training should be given to the Ayurveda Vaidyas, and collaborative research initiatives may be taken from our side for the development of standardized protocol with the integration of technology, statistics and data analytics. So from my part, we can say that Chindaniyaki Vibadam Adaveva Pradikriya Nakuba Khananam Yuktam Pradipte Manina Grihi. The first step of data collection may be initiative from our part by validation, so that from theory to practice we can achieve by proving the validity of our results. The Chikitsa Kartum Arhadi, the Chikitsa will be successful from our part.
and I bow before all my gurus for sharing their experience in the Chigilsa, for presenting this presentation, and also the special thanks to statistician, my husband, Dr. Nidhi, assistant professor from MA College, Kerala. And on this World Statistics Day, I would like to share my views, and also uh, I would like to extend my gratitude to Dr. Pavan sir for providing me the opportunity in this prestigious platform to share my thoughts on integration of statistics in Ayurveda. And as an Ayurveda Vaidya, I would further look into the many of the measures what we can do as a research person for integration of statistics in Ayurveda from my side, and extend my gratitude to all the Ayurveda Vaidyas present here. Thank you all. Thank you. Thank you very much, Dr. Geetika. Thank you very much. Very nicely explained and concept explained, beautifully concept explained, well in time. I would like to invite Professor Ramdas PV because he is also from Kollam. Professor Ramdas ji, welcome. Yes, sir. Sir, I'm in traveling. Actually, I'm going to my village. My mother is not well. Oh. So I'm on the way to train, sir. She is a very good student and she is a very good doctor. She has done her research in a PG thesis in a very wonderful manner. Well, And her husband is belongs to the same statistical department. Okay, so she will be continuing this in a very beautiful manner. She will be a good asset for the Ayurveda, sir. This much I can say. And thank you for giving her a chance to present in your platform. That is so great. Thank you. Thank you very much, sir. we would like to communicate our gratitude to you for recommendation. Thank you. Thank you for introducing Dr. Geetika. Thank you, sir. Thank you very much. So now I would like to request Professor Dr. Devnath, P.K. Devnath ji. Welcome. Welcome, Dr. P.K. Devnath. He is Associate Professor in Guru Gorakhnath Institute of Medical Sciences, Gorakhpur. Studied at Hassan. Namaste, sir. Thank you for your... Please stop share, Dr. Geetika. Okay, sir. Our next webinar is on osteoporosis, so please stay with us. I would like to welcome Professor Namrata Chauragade ji. Welcome, Bhaviji, welcome. She is head of department in Sanhita, Mansarovar Medical College, Bhopal. Welcome. I'm not able to... Thank you, sir. अब आप लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, जुड़ते रहिएगा. हाँ हाँ जरूर जरूर. I'm not able to share, sir. Yeah, thank you. Hari Om, Hari Om. Yes. Thank you once again, Dr. Professor Pavan Sharma, sir. I have been part of this journey from the starting also. Am I audible? Okay, thank you. So, today as a World Statistics Day, I would like to share not about in details what is about statistics, but I would like to share that how can we integrate biostatistics in AYUSH system. And from starting, what we can say at the present, the world is going through a very much change, we can say, and that change has been brought by data science. And another concept is AI. AI is helping this data science to thrive. So data science, whenever we talk about statistics or biostatistics, whatever you can say, data science is the mainstream of this system. So when talking about biostatistics, basically it's the system which bridges the gap between living organisms and quantifiable data.
and what it can predict, what we can do in the future also. So, why biostatisticians are required to develop statistical methods? Because we can use statistics in clinical trials, epidemiological studies, human genetics, genomics, and spatial studies. I'm not going to go into details because learned audience may already know. Now, since our topic is about biostatistics in AYUSH, so AYUSH already is integrated inside traditional medicine. And when I'm talking about this data that WHO has shared that statistics can, traditional medicine can maintain health, prevent, diagnose, improvement and treatment of physical and mental illness. Next one, what comes? There are 170 of WHO's 194 member states. So this is the data. And this is biostatistics, what we are talking about. And in 2018, there was a declaration of Astana where they acknowledged the primary healthcare and the need to include traditional medicine knowledge technologies in the delivery of primary healthcare. So biostatistics is part of primary healthcare, traditional medicine, and whatever we talk about, any numbers, it's biostatistics. So another thing is role of biostatistics in public health. As my specialty comes from public health, so I'm a little bit biased toward this subject. So as we know, biostatistics can be part of public health. Whenever we talk about data, prevalence, incidence, all these things, public health, inside public health, it is data and it is biostatistics. And since knowledge system remains part of our contemporary lives, so Ayurveda, Unani, Siddha, Swarikpa, whatever you can say, biomedicine is all based on biostatistics. Now, when we are talking about biostatistics, another part of it is also known as bioinformatics. So bioinformatics is the basic disciplines of science, mathematics, probability and statistics, and computer science to build a statistical foundation for making advances, improvements, and even breakthroughs in public health and medicine. So what informatics does, it is the intersection of information science, computer science, and healthcare. So use of biostatistics through computer and information technology is also, we can say, informatics, and this comes together because whenever we are talking about biostatistics, present day complex data handling cannot be done without a computer and software related to biostatistics. So there is role of analyst in informatics. So what analyst can do? The main responsibility of system analyst in biostatistics and information include incorporating bioinformatics and biostatistics into efficient and automated data analysis tools. What I have already discussed, that informatics and statistics go hand in hand. Now there is a very important modeling structure, that is what is called predictive modeling biostatistics. Since this is the cornerstone which is used in public health, and whenever we can say public health, Ayurveda comes first, because with our complex preventive, curative, palliative measures, our health system can immensely improve. So predictive modeling, where data is used for screening individuals, to find risk of certain disease. Predictive modeling is not only limited to cancer, like pandemics and cancers, we can use it, and we can use it to predict the future also, what can be done, or any kind of disease, any kind of treatment, any kind of intervention which is to be incorporated in the future. Through this predictive modeling of biostatistics, we can understand this. But one thing we should understand, that too much data cannot be properly analyzed once. So a knowledge of biostatistics will establish the proper quantity of that
preserve the quality of the statistical findings. This is a very important thing to understand. Now, when we can bridge biostatistics with AYUSH, so as you see through the slides, there are some steps that if we want to improve the AYUSH healthcare services and everything, public health and clinical research will pave the way for it. And finally, biostatistics will show us the way. Also, biostatistics, when we are talking about implementation in traditional medicine, WHO have already implemented a traditional medicine strategy, which is going on 2014 to 2023. This medicine strategy, traditional medicine strategy was established. So these gave some guidelines about traditional medicine. But whenever we are also asking that promoting safe and effective use of traditional medicine through regulation, research, and integration of traditional and medicine products, practices, practitioners into health system as appropriate. Everything comes with the data. Because if we want to use safe use of medicines, we need to have data, how much the data is safe. So biostatistics is everywhere, like existing model of integration of member states, records and recommended best practice. Here also importance of statistics is there. Another is developing research and knowledge database. Then there are clinical evidence databases. From there we can understand diseases, treatments, etc. And also there is a traditional knowledge platform, which is again data. So everywhere where standard norms and technical documents are also made, prepared to highlight the knowledge gaps, there is also involvement of statistics. Even when common, like whatever the common health output we can say, that is through mortality and morbidity statistics. That is also data statistics and that is also data. Now, biostatistics can be implemented and is already implemented in the field of Ayurveda, and new emerging areas which are coming up heavily relies on biostatistics. You can see that there is a new subject called Ayurveda biology, Ayurveda genomics, Ayurveda pharmacoepidemiology, Ayurveda nutrigenomics, Ayurveda informatics, Ayurveda pharmacovigilance, Ayurveda economics. All these Ayurveda related things is primarily based on statistical data. So, as my field of expertise, or what you can say liking, a subject is developed, already the subject was there, that pharmacoepidemiology. So in Ayurveda there is very much less data. Data generated are less, quality of data is not proper, and also softwares and statistical handling tools are not there proper for Ayurveda to thrive. So a subject, newly emerging subject is Ayurveda pharmacoepidemiology, which uses biostatistics, and it affects or it's supported or it supports the burning areas of primary and universal healthcare, health economics, public health and clinical research, preventive and palliative health. These all are interconnected with biostatistics. And pharmacoepidemiology is a stream which uses statistical data to form the basis of all these topics and informations as needed. So basically population data, health data and medical data are all collected and which are personalized and disseminated as per the need of the population. And at the end, I would only like to share that the value of our health and medical research investment is at risk unless we foster the discipline of biostatistics. Thank you. Thank you all. Any addition? We have a time of 20 minutes at present. So one session can be conducted. And if you would like to explain something in detail, that will be better.
आज हमारे पहली बार हुआ है कि आयुर्वेद के स्पीकर्स ने वेल इन टाइम खत्म कर दिया है। अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंस है ये। सर टॉपिक ग्रेट, ग्रेट, रियली ग्रेट। आप चाहेंगे तो बहुत बोल सकते हैं, लेकिन टाइम कांस्टेंट के हिसाब से हमने सोचा कि इसको छोटा कर दे। नहीं, वो आज मृणाल थोड़ा व्यस्त है, तो इसीलिए मैं ये पूछना आप दोनों से चाहता हूँ तो एक एक करके, क्यों आयुर्वेद के स्टूडेंट को स्टैटिक्स पढ़ना जरूरी है? और नंबर दूसरा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से भगता है बच्चा, बड़ा बुरा लगता है बच्चे को कि कहाँ फंस गया, मैथ से बच के आया था, आयुर्वेद में भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो ये कब से पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए? सर एक अपने कोर्स में एनसीआईएसएम के कोर्स में किस ईयर से है ये? अभी तक जो समझ में आया सर, इट विल बी इन द थर्ड क्रॉप। स्टैटिस्टिक थोड़ा सा रहेगा, लेकिन मुझे फील होता है कि सेकेंड क्रॉप में जब स्वास्थ्यविद्या पढ़ा रहे हैं, तब एपिडेमोलॉजी बोल के सब्जेक्ट है वो भी पढ़ा रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स उस वक्त थोड़ा बहुत इंटीग्रेट किया जाए तो बेहतर होगा बच्चे को समझने के लिए। क्योंकि सबसे कॉमनली जब भी हम कोई डेटा का बात बोलते हैं, सिंपल, अगर मैं बोलूं ब्लड प्रेशर इज 120/80, तो ये तो ऐसे नहीं आया, तो ये भी एक स्टैटिस्टिक्स है। तो बच्चे को एटलीस्ट समझना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स को कैसे आया, स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज करना चाहिए। अब बात हुआ भगने का, तो जितना भी हम मेडिकल वाले हैं, मैथ से भाग के ही मेडिकल में आए हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर थोड़ा सा समझ के किया जाए, पढ़ा जाए, वेरी इजी है, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मुझे तो लगता है मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट मुझे स्टैटिस्टिक्स में आया। मैथमेटिक्स से हम भी डरते थे, लेकिन जब मेडिकल साइंस में आके स्टैटिस्टिक्स समझने लगे, उसका यूज समझने लगे, क्योंकि हम कुछ भी बात बोलते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स रहता है। पकड़ लीजिए प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज, इंसिडेंस ऑफ डिजीज, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, कुछ भी हम बोलते हैं वो स्टैटिस्टिक्स है। तो थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान अगर दिया जाए, अभी भी हम देख रहे हैं कि सीसीआरएस ने स्पार्क बोल के प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे लोग रिसर्च कर सकते हैं, छोटा छोटा प्रोजेक्ट लेके काम कर सकते हैं, उसके लिए स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है। तो अगर ये सेकेंड क्रॉप से स्टैटिस्टिक्स थोड़ा पढ़ाना शुरू हो जाए, तो बच्चों को भी समझ में आएगा रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स क्या है, तब वो और भी आसानी से अपना रिसर्च का काम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा बोले तुम। मैं डॉक्टर गीतिका से इसी बारे में ओपिनियन चाहता हूँ, फिर मैं आदरणीय नम्रता जी से चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। तो डॉक्टर गीतिका जी, निशान जी नमस्कार, गुरुदेव नमस्कार। डॉक्टर गीतिका, एम आई ऑडिबल टू यू? डॉक्टर Yes, गीतिका, sir. Yes, sir. इन योर ओपिनियन, in your opinion, from which year it should be taught and why it should be learned by Ayurvedic students? Sir, actually, from my opinion, first year onwards, we should integrate this science into Ayurveda, because first year onwards, they will be studying the classic literature, Samhitas and all. And nowadays, the children they are having confusion regarding the efficacy of our kashayams, efficacy of everything. So, if we first year onwards integrate this statistical science and tests are there to evaluate our results, so there will be one strong base for our science. So we will move deep into our literature, and we will make them study the classical literature Samhitas very well using this statistics. You are very right. Absolutely, you are right. Now I would like to request डॉक्टर नम्रता चौरागड़े जी कि ये कौन से ईयर से हमको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना चाहिए और क्यों बच्चे को पढ़ना चाहिए? ये तो एमडी का काम है। ये लोग बच्चे बोलते हैं, अरे सर ये तो मैथ्स फिर आ गया, बायोलॉजी में आए थे, मैथ्स फिर आ गया इनडायरेक्ट। आपकी ओपिनियन? हाँ, नमस्कार।
हाँ, मुझे भी लगता है कि फर्स्ट ईयर उनका हो जाए, कुछ उनके कंसेप्ट बेसिक क्लियर हो जाए कि क्या चीज क्या है, कुछ टर्म्स उनको समझ में आ जाए, और उसके बाद में उनको फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से होना ही चाहिए। थर्ड ईयर क्योंकि से तो है ऑलरेडी शायद। नहीं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो है, फाइनल ईयर में है ही, पर सेकेंड ईयर में भी हो तो अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कई हाँ एक्टिविटीज दे दिए हैं आजकल, कई सर्वे दे दिए हैं, तो हाँ हाँ स्टेटिस्टिक्स शुरू से हो जाए तो अच्छा। सेकंड हाँ, ईयर। क्योंकि अगर वो रिसर्च क्या है वो समझेंगे, और स्टूडेंट लाइफ में अगर वो छोटे छोटे रिसर्चेस ही करने लगे, यानी जी। बेसिक रिसर्चेस अगर वो उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उनका अपने शास्त्र के प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा। छोटे छोटे से कुछ वो करके देखेंगे खुद से रिसर्चेस बहुत, तो उनका विश्वास बढ़ाने के लिए, अपने संहिताओं में विश्वास दृढ़ करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो समझे रिसर्च को। और आज बिल्कुल, का तो जमाना ही रिसर्च का है। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। ये पॉइंट ही ऐसा है कि बच्चा जैसे तैसे बायोलॉजी में आता है, और बायोलॉजी में फिर हम लोग उसको मैथ्स पकड़ा देते हैं। वो कहता है ये हाँ, क्या हो गया, ये फिर मैथ्स आ गया। और नहीं जो नहीं, बच्चा मैथ्स एक्चुअली तो मैथ्स इजी है उसमें, यानी मुझे तो सबसे इजी मैथ्स ही लगता है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने की। हाँ, ठीक बोले, ठीक बोले आप। हाँ, याद कुछ नहीं करना है, बस मैथ्स करना है। बहुत अच्छा बोले आप, बहुत अच्छा। जुड़ते हम्म। रहिएगा। भारत जी आ गए लौट के? नहीं, सुबह आएंगे। बहुत अच्छा, वेलकम वेलकम। मैं अब आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर से उनके आशीर्वचन चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर रिसर्च स्टूडेंट्स को, पीजी स्कॉलर्स को, पीएचडी को गाइड किया है। उनकी एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियन। रेस्पेक्टेड प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर। नमस्कार सभी विद्वानों को। नमस्कार सर। जहाँ तक सांख्यिकी शब्द का है, ये तो ठीक है, आधुनिक है, किंतु आयुर्वेद की बात करते हैं तो जब हम तर्कशास्त्र, न्याय, दर्शन सब पढ़ते हैं, तो संख्या स्यात् गणित ये चरक में लिखा है। और सांख्य दर्शन के हिसाब से तो गणित से डरना तो नहीं चाहिए। अगर आयुर्वेद में रहना है तो हर पल गणित है। ये सब दशतो रसेत, बाल्यवृद्धि, छविर मेधा, त्वक दृष्टि, विक्रम, तो ये जो कैलकुलेशन है, अगर गणित नहीं हो तो कैसे होगा। तो ज्योतिष का गणित शास्त्र है, ज्योतिष में भी गणित है। और जहाँ आयुर्वेद पढ़ने के लिए हम आए हैं, तो ज्ञान तो होना चाहिए कि, तो हाँ ठीक है, आपका जो शंका है वो वाजिब है। और जब जिसको कहते हैं ना बाला नाम, या मंद बुद्धि वैद्य, जिसको हम लोग ने माधव निदान में देखा, तो उसके हिसाब से यही है कि सब गणित से डरते रहते हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको उसको समझ करके और अपनाना चाहिए। तो सांख्यिकी जो है वो एक तरह से, ये भी कहा जाता है कि पंडित जी के बच्चे जो है ना नदी में डूब जाते हैं औसत के हिसाब से। तो जो स्थिति हमारी बनती है सांख्य शास्त्र, संख्या वाला, तो उसमें हमको अपनी बुद्धि का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो झूठे आंकड़ों का शास्त्र है सांख्यिकी, तो ऐसा भी एक शब्द है। तो हम इसको भी विचारें। और फिर ये है कि जब हम बचपन से, जब आयुर्वेद की बात आई, तो आयुर्वेद तो बाद में आए, पहले भी जब पढ़ने की बात थी तो सब गणित पढ़े, तो न मैथ से तो है, मैथ से ले सकते हो, साइंस तो नहीं है यहाँ पे, तो नहीं, सब मैथ से नहीं लूंगा क्योंकि कठिन है। तो चलो हिंदी ले लो, सब हिंदी में 5 किताब पढ़नी पड़ती है, हिंदी भी नहीं लेंगे, संस्कृत ले लेंगे, इकोनॉमिक्स ले लेंगे, ज्योग्राफी ले लेंगे, 2-2 किताब पढ़नी पड़ेगी। तो ये अपनी समझ की बात है। और जब समझ आई, और एमडी में सांख्यिकी फर्स्ट में हमने पढ़ा, तो सीधा है वो सब हम ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए थे। और जब आयुर्वेद में आए और सांख्य शास्त्र, सांख्यिकी को पढ़ा, तब एक बात समझ में आई कि हम फालतू डर रहे थे। इसलिए चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ा, क्योंकि जब 10+2 की बात आती है, तो वो उसके पहले जो है वो गणित वगैरह सब पढ़ते हुए आते हैं, और आजकल तो काफी एडवांस्ड है। और वैदिक मैथ्स भी आजकल बच्चे पढ़ लेते हैं, इसलिए डरना नहीं चाहिए। और बाकी तो जो विषय विशेषज्ञ हैं कमेटी में, जिनको जैसी समझ है वैसा वो रख देंगे, फर्स्ट ईयर में रखो या कभी रखो। दस शास्त्र कभी थर्ड ईयर में होता था, कभी सेकंड ईयर में आ गया। तो ये सारी बातें जो है, ये तो प्रयोग धर्मिता वाला मामला है। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि
जहां भी हो, किंतु हमको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। और पढ़ने में भी सारा वायवा आपका अच्छा हुआ, परीक्षा का, सांख्यिकी का और इतिहास का, ये सब साथ में होते थे। तो बाद में उठते उठते, रुकिए रुकिए, ये बताओ कि सब चरक संहिता में सांख्यिकी कहाँ है? वहां जाकर के मैंने कहा, सर चरक संहिता में सांख्यिकी तो ढूंढना पड़ेगा, किंतु हाँ, इतने ज्वर हैं, इतने ये हैं, संख्या जो बताई है वो तो नहीं। हाँ, सांख्यिकी का दूसरा क्या है? तो सब संख्या साथ गणित। तो सांख्य दर्शन में गणित तो पहले है, और चरक जहां से पढ़ते हैं वहां से आप सांख्यिकी भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही कह के मैं धन्यवाद दूंगा। नमस्कार। आदरणीय अग्निहोत्री सर। जी सर, प्रणाम। सभी को प्रणाम, मंचासीन सभी हमारे अतिथि वक्ताओं को, और गुरुदेव द्विवेदी सर को, और निशांत शुक्ला साहब को, सभी को हमारा प्रणाम है। हम इस आज की बायो स्टेटिस्टिक्स विषय पर आधारित अपनी अगर आज के वेबिनार की चर्चा करें, तो सबसे पहले तो हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर गीतिका जी को, जो हमारी प्रोफेसर रामदास पीवी साहब के द्वारा रिकमेंडेड है। सारे कुछ स्टफ के साथ साथ जो एक चीज में सबसे ज्यादा अपीलिंग लगी, वो ये कि बहुत ही मॉडेस्टी है उनमें, बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया, और बहुत ही नम्रता जिसको कहेंगे, साक्षात। और प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहा। और फिर हमारे जो परीक्षित देवनाथ जी ने, उनका लास्ट ईयर में याद आ रहा है, बहुत गहरे से उस बार बोले थे पिछले साल, बहुत बहुत लंबाई से पूरे वॉल्यूम से बोले थे। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सांख्यिकी के बिना गति नहीं है। लेकिन अभी आदरणीय द्विवेदी सर जो बोल रहे थे, और आपने उनसे पूछा है कि हम BA MS में या MD में इसको कहाँ पर इसका प्रवेश या इसका अध्यापन उचित पाते हैं, तो देखिए वास्तविकता यह है कि BA MS ग्रेजुएशन लेवल पर 15 विषयों का हम पर लोड, और पोस्ट ग्रेजुएशन में जहाँ तक BHU सवाल था, वहाँ पहले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी चारों को लेवल अप कराते थे मॉडर्न मेडिसिन वालों के यहाँ, और हमारे यहाँ 5वां विषय रह जाता था जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद। तो इस तरीके से वहाँ पर मेडिसिनल स्टेटिस्टिक्स और मेडिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ये एडिशनल सब्जेक्ट थे। बायोकेमिस्ट्री तो फिजियोलॉजी के साथ थी। मेडिसिनल केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं होता था, पढ़ाई पूरी होती थी। तो अब कुल मिला के ये लगा कि बच्चा इसेंशियली 10+2 का आता है। अब इसके बाद आपकी चॉइस है कि आप उसको किस स्तर पर देना चाहें। बल्कि बेहतर अगर फर्स्ट या सेकंड में दे देते हैं, और अगर उसको पदार्थ विज्ञान और एनाटॉमी नॉन अपीयरिंग सब्जेक्ट की बात है तो ठीक है। अन्यथा जितनी वो दूर चला जाएगा इंटरमीडिएट के बाद का, उतनी ही उससे जो पिछला जो ज्ञान है वो उससे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। क्योंकि ज्यादातर बायोलॉजी ग्रुप के आते हैं, मैथमेटिक्स वालों के लिए तो इजी गोइंग है, चाहे वो लॉगरिथमिज्म हो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, और चाहे हमारा स्टेटिस्टिक्स हो। तो इसलिए ये जरूरी है। अच्छा, फिर रिसर्च वर्क के लिए अब आज ये हो गया कि मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक कॉलेजेस में PG हो गई है, और 10-10, 11-11 सब्जेक्ट में हो गई है। तो उस हिसाब से बच्चे अब कोशिश यही करते हैं कि हम PG में भी नीट क्रॉस करें और PG जाएं। तो तब वहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। उस आधार पे आवश्यक हो जाता है कि हम उसको बेसिक नॉलेज इधर से ही ले लें, भले ही वो सब्जेक्ट कैसा रहे। तो मेडिकल स्टेटिक्स बच्चे फंसते जरूर हैं मेडिकल रिसर्च वाली पेपर में भी, लेकिन उपादेयता जिसकी अब आवश्यक हो गई है। और आगे तो आप जानते हैं PhD तक में जाते ही हैं, तो उस हिसाब से जहां पर वर्कलोड कम हो, जहां पर सब्जेक्ट का ईयर का लोड कम हो, वहीं पे शुरू कर दें, इनिशियली कर दें, तो ये बुराई नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ में हम आज के पुनः अपने अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और सभी ने बड़े अच्छे से अपने विचार मैं रखे। आदरणीय निशांत शुक्ला जी को जी उनके स्वागत। कमेंट्स के लिए बुलाता हूँ। वो भी जामनगर के PG हैं। फिर जी उसके बाद आदरणीय हम वो वेबिनार चेंज करेंगे। जी हमारे आदरणीय वक्ता VD अग्रवाल जी, निशांत जी आ चुके हैं। तो मैं डॉक्टर निशांत शुक्ला को स्टैटिस्टिक्स के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर इन गुजरात। नमस्कार सर। संख्यात संख्यैः सहासीनं पुनर्वसुं जगत हिताय प्रपच्छ। ये शब्द चरक संहिता में है। शायद मैं पहले से नहीं जुड़ा हूँ, शायद ये पुनरुक्ति दोष भी हो, पर सांख्य शास्त्र का शायद भारत में ही, और सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का भी जन्म भारत में ही हुआ है। प्रायः और भूयिष्ठ, ये दो वैल्यूज की हम बात करते हैं, और आज
प्रायः की जो हम बात करते हैं इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, लेवल ऑफ इंटर रिलेशंस की, को रिलेशंस की, इस पर काफी ज्यादा चर्चाएं और उसके परिणाम स्वरूप जो उसके निष्कर्ष आए वो हमारे संहिता के रूप में लिखे हुए हों, ये हमें ज्यादा जो है ये लगता है। तो इस प्रकार से बायोस्टैटिस्टिक्स का आयुर्वेद में एक काफी इम्पोर्टेंट रोल है। आज की स्टैटिस्टिक्स में जो भी वेस्टर्न एडवांसेस हुए हैं उसको हमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, और जितने भी इंडियन फिलोसॉफीज हैं सांख्य के बारे में उसको किस प्रकार से हम अपने स्टडी में करें, तो डेफिनेटली हमें जो है ये एक अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन भी हो सकेगा, हम उसको जो है वो एविडेंस भी दिखा पाएंगे। इसका सबसे ज्यादा अगर उपयोग हुआ है तो चारक संहिता में रोग और औषधियों की गणना के संदर्भ में ये किया गया है, और ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट जितने भी थे उनकी बात है। जैसे कि ज्वर में हम त्रिदोष की बात करते, द्विदोष की बात करते, पर गुल्म में द्विदोष गुल्म की उपयोगिता या फिर द्विदोष गुल्म के वर्णन नहीं लिखा गया है, त्रिदोष गुल्म का वर्णन लिखा गया, क्योंकि ये एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट जो है ये चेंज था। ज्वर में यही तो होते हुए भी द्विदोष के भी अलग से लक्षण लिखे गए थे कि जो स्टेटिस्टिकली डिफरेंस थे, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफरेंस थे दो के कॉम्बिनेशन से। तो इस प्रकार से जो संहिताएं लिखी गई हैं वो उसी के आधार पर है। आज हमें उस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा और उस हिसाब से आगे चल करके हमें आयुर्वेद में भी सांख्यिकी को समझ करके उसके आधार पर ही रिसर्च आउटकम्स हमें लिखने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी आदरणीयों को बहुत बहुत आभार। मैं लिंक चेंज कर रहा हूँ। आदरणीय अग्नि। धन्यवाद प्रसन्न शर्मा जी। आदरणीय शुक्ला जी ने वही शब्द रखे जो सच्चाई है, और हम सब लोग जानते हैं कि न्याय वैशेषिक और सांख्य पर हमारा आयुर्वेद स्थापित है। इसलिए स्वाभाविक सा हो जाता है कि सांख्य दर्शन जो महर्षि कपिल देव जी ने प्रस्तुत किया था, उसके क्रम में जितने भी संख्या शास्त्र है, जहाँ कहीं रोगों के भेद और जहाँ पर औषधियों का जितना भी उन्होंने वर्गीकरण किए हैं वो सब संख्या पर ही आधारित है। और इसलिए बायोस्टैटिस्टिक्स का जीवंत उदाहरण तो हमारे चरक के ग्रंथ ही है, और उसको आज बदली परिस्थितियों में मीन, मीडियन, मोड और सिग्मा और बनाना वो एक आज की डिमांड के हिसाब से फॉर द